We now take you back to the press conference of Power Minister Piyush Goyal. 600 crore people in the world to see on their computers. Real time, second by second, the bidding process was transparent. If some people have not bid wisely, I think this question is best directed to the wise men who run those companies. As far as the government is concerned, it had very, very transparently, on more occasions than one, in the bidding document, in press conferences in this very hall, in press conferences all over the country, on the floor of the house, of both houses, announced that the bidding will be a reverse bidding mechanism, and whatever benefit the bidders are giving in terms of lower power cost will be the defining criteria on who wins the bid. After winning the bid in a transparent auction, they were expected to pass this benefit to the consumers. We had declared that the bidding, that the criteria for determining tariff will be revised and has accordingly been revised so that this benefit get passed on to the consumers. If somebody assumed otherwise or wanted to be unfair in their bidding by hoping to be irresponsible or not pass on the benefit to the consumers, I think it is very unfortunate, and nobody should try to do such things which will cause damage to the effort to bring in more transparency and to pass on such benefits to the consumer. Yeah, Mr. Anuj. सर मैं अनुज गुप्ता नव भारत से सर अप्रैल के पहले हफ्ते में जो कोल ब्लॉक्स जीतने वालों को जो उनके हस्तांतरण हुआ क्या वो सर यहाँ पर क्या वो सारे कोल ब्लॉक्स का हस्तांतरण ठीक तरीके से हो गया या कहीं कहीं पे प्रोडक्शन अभी भी पहले के लेवल पे नहीं पहुंच पाया है और इसी के कारण आगे के ब्लॉक्स आपने रोके हुए हैं? मैंने अभी बताया किस प्रकार से कोल इंडिया की प्रोडक्शन, कोल के विभाग की प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ आपको और आप सभी जानते हैं कि आज देश में सभी प्लांट्स में पर्याप्त मात्रा में कोयला है, तो इतना तो आप समझेंगे कि आज कोयले की कोई समस्या नहीं है। आवंटन नीलामी से हुआ निजी क्षेत्र को, और जो पुराने ज़माने में सरकारें कॉरपोरेट्स को लाभ देने के लिए फ्री ऑफ चार्ज, बिना शुल्क, निशुल्क कोयले के ब्लॉक्स का आवंटन करती थी अपने रिश्तेदारों को, अपने सांसदों को, अपने राजनीतिज्ञों को, वो सब रोक के एक सुचारू रूप से नीलामी की गई। एक दो केस में हमें ध्यान में आया कि नीलामी का जो दाम ऑफर हुआ है वो बाकी दामों से बहुत ही बड़ी मात्रा में कम था, इसलिए उस पर हमने उस बिड को एक्सेप्ट नहीं किया और बाकी सबका आवंटन ठीक ठाक से हो गया है। मेरे ख्याल से अधिकतर मायने चालू हो गई हैं या उनका जो पेपर वर्क एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से रहता होगा वो और स्टेट गवर्नमेंट से वो चल रहा होगा, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से उनको पूरी मदद मिलती है। Will you tell about that portal? इस संबंध में पारदर्शिता के दृष्टिकोण से ये भी प्रयास किया गया है कि जितनी इस प्रकार की इकाइयां हैं, यदि उनकी कोई समस्या है तो उस पोर्टल पे उसको अंकित कर दें और उसका सहयोग हम स्वयं दे रहे हैं। निरंतर राज्य सरकारों से संपर्क बनाए हुए हैं, केंद्र सरकार के विभागों से संपर्क बनाए हुए हैं, और इसमें प्रमुख रूप से जो शेड्यूल 2 की जो माइंस थी उसमें से तो 5 में प्रोडक्शन चालू हो गया है, बाकी में किसी भी दिन हो सकता है क्योंकि ये प्रक्रियात्मक हस्तांतरण की है और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि हैंडओवर और टेक ओवर होता है, उसके बाद उसमें पेपर वर्क भी होता है, लेकिन सरकार उसमें निरंतर रूप से लगी हुई है। Good afternoon, sir. Nitya Balakrishnan from ET Now. This side, Mr. Goyal. Congrats to you and your team for a very successful year one. When you talk about lofty targets that you have set for the next 4 years, obviously we need more investment. And in the last couple of years, when you talk about lenders, they've been very wary of lending to the power sector, steering clear away from projects that have been stalled, away from lending to state electricity boards, etc.
do you see with the measures that you have taken, this particular issue of the lenders being addressed? Are you seeing a turnaround in sentiment? Have you spoken to banks, and what are they talking about lending to power projects at the moment? And also, if you could give us a quick update on the next round of coal block auctions. We were expecting it towards the end of April, beginning of May, but where does it stand now, and how soon can we see 20-odd blocks go under the hammer, please? Well, as regards the lenders are concerned, they will obviously go by the credit worthiness of the borrowing company. In fact, only today I was reading that large amounts of bond offerings are very successfully being made. If there are certain companies who have over-borrowed or over-leveraged their balance sheet and in the past have misused easy lending norms and have come to grief today, it is certainly not our responsibility to bail them out. They will have to look out for their own interests. But as far as investment is concerned, today's paper has so many articles of new investment coming into the market. In fact, I was very happy to read about an interview of a foreign company in today's Financial Express, which speaks about how after they had given up on India, they are now once again looking at, if I may quote, cut to 2015, the company pledges $2 billion for its second coal-based plant. So I think this very clearly, amply demonstrates the renewed interest. I have met with investors in London, in New York, and in Washington in the last 7-8 days. And I can reassure the people of India that there is a very, very high degree of interest in this sector. With the new bidding of gas, we have been able to resolve a number of projects in the gas sector. Would you like to tell them about the gas? Well, as most of you already know, that the gas projects, the gas-based power projects were stranded for a very long time. About 14,000 megawatt capacity of gas-based capacity was not getting any gas at all. And about 10,000 capacity was getting some little gas, which were operating at suboptimal capacity. Now, this very innovative scheme that was introduced recently and the auctions were conducted, as a result of that, we are very happy, you people already know it, to tell you that 15 plants have won gas allocations, and they will be, which involves a capacity of about 10,000 megawatt. They will be producing about 5.7 billion units of power just in these 4 months, between June to September. And the DISCOMs will be getting that power at or below 4.70 rupees. So this, I think, has been a major achievement. This was pending for a long time. The developers were, talking to the government on this. And this also, in a way, answers the question which was raised by the lady, that the bankers were having a huge problem with regard to these stranded gas-based plants. And the revival of these plants, we have designed it in such a way that the proceeds, whatever DISCOMs pay for the procurement of power from these plants, actually goes to the banks. They don't go to the developers. Those proceeds go to the banks, and the banks will adjust it against their borrowings, against what they have lent to these developers. Similarly, the coal auctions will resolve the issues with the stranded coal-based power plants, which will again ease up the troubles of the banks. Hello. Nitya, just to put your last question, auctions of coal blocks will be a continuous process, and as and when more coal blocks come, which we are confident meet all the requirements, they are ready for auction, we'll give you a timetable. We always give transparent timetable, and we stick to our timetable. Yeah. Sir, 125. Yeah. This is Manoj from TV Today. You said you painted a very rosy picture of your ministry and the economy. Do you have any doubt in my figures? I don't have any doubt, but Because rosy can be a double-edged. One of your predecessors in coal ministry and the former Prime Minister has today said that all is not well in the Indian economy, and RBI itself has said that the recovery is fragile,
And about the things that you mentioned, that favoritism was there in earlier regimes. He says, I never used my office for favoring anybody close. He has made a certain observations while saying this. How do you react to this entire thing? He says that democracy is under threat, and I think you should ask a question, please. What is this? So Please ask your question. How do you see any merit in their assertion that all was well in the Indian economy, and your government is merely repackaging the schemes that they launched? Well, they should make up their mind what they want to say, because Prime Minister has already responded to your last question on the floor of Parliament. We are still trying to find what scheme they have launched. Even the Food Security Act was a repackaging of the Antyodaya Anna Yojana which Prime Minister Vajpayee had initiated. So actually, मैं तो ढूंढ रहा हूँ बहुत दिन से, अभी तक कोई भी चीज़ नहीं मिली है जो यूपीए ने ईमानदारी से लॉन्च की हो. हाँ, ये जरूर किया कि बड़े बड़े नाम दे दिए और राइट बेस्ड सरकार चलाई, लेकिन वो राइट्स का जनता को तो कुछ लाभ मिला नहीं, और वो जनता ने जवाब देके ऐसी स्थिति पे ले आई उस पार्टी को कि अभी वो दिख भी नहीं रही है पार्लियामेंट में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बना पा रही है. बाकी आपके प्रश्न जो है वो निजी उनका सफाई है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा. सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो आप सबके सामने है, उस पर आप अपना जवाब बना सकते हैं. Yeah, 7. Hello, sir. Shreya from Business Standard. Given that two of your flagship schemes, the Deen Dayal Upadhyaya and IPDS, would need state participation, and some 40,000 megawatt of gas and coal-based capacity would start kick-starting and would depend on the financial health of DISCOMs, how are you planning to bring states on board for these two schemes, especially non-BJP states? Well, whether it's BJP or non-BJP, I intrinsically believe that every elected representative is conscious that he has to go back to the people of India after 5 years with his report card. Of course, we give our report card with greater degree of consistency. I was before you after 100 days. I was before you after 200 days. I am before you today. I do hope all the states recognize that when they go back to the people, they will be accountable for their performance. Just as you saw governments in the last 5 years being decisively thrown out for non-performance, be it Haryana, be it Rajasthan, be it Maharashtra, be it Jharkhand, be it Jammu and Kashmir, I can list them out ad nauseum. In the similar fashion, you also saw good governments being rewarded by a renewed and even bigger mandate, be it Gujarat, be it Madhya Pradesh, be it Chhattisgarh. So I am very confident that the state chief ministers, and my interactions so far have been most cordial. They are supportive. Some states are more proactive. I can tell you the power minister of Maharashtra religiously calls me every 2 days how much more money I can give him under Deen Dayal Upadhyaya and IPDS. So different states have different degrees of proactive approach to serve their people, and accordingly, I am sure there will be some states which will perform exceedingly well. The laggards will be shown the door by the people next time. Yeah, placard number 1. Yeah. सर, रक्षित हूँ एबीपी न्यूज़ से, बिल्कुल ठीक आपके सामने. सर, आपने जब स्टेट डिस्कॉम्स की वित्तीय हालत की बात की तो आपने जिक्र किया राजस्थान का, महाराष्ट्र का और हरियाणा का. वहाँ पर पुरानी सरकारें कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की सरकारें आई हैं. मेरा सवाल ये है कि इनके अलावा जो अन्य बड़े प्रदेश हैं, खासकर यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, वहाँ पर डिस्कॉम्स की क्या हालत है? और अब जिस तरीके से गर्मियों का मौसम आ रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी लोड शेडिंग शुरू हो गई है, तो क्या हालत रहेगी वहाँ पर बिजली की? सर देखिए, बिजली आज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. मैंने तो चिट्ठियां लिखी हैं हर राज्य सरकार को कि आप बिजली खरीदिए, किसको भी कोई कोयले की भी कमी नहीं है. हर राज्य सरकार को हम उनके कोयले के स्टॉक्स हर प्लांट में कितने हैं वो भी मैंने इन्फॉर्म किया है.
आज कई बार तो चिंता हो रही है, ये 11.7 जो कोयले के उत्पादन में कोल इंडिया में वृद्धि हुई है 56 दिनों में, पहले 56 दिनों में, 56 का सिग्निफिकेंस काफ़ी है वैसे। उससे मुझे लगता है कि राज्य सरकारों में भी ये चेतना उजागर होगी कि जनता की वो सेवा करें। सभी राज्य सरकारों को आज पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है। दक्षिण में कुछ कठिनाइयां जरूर है क्योंकि ट्रांसमिशन कैपेसिटी एक वर्ष में नहीं लग सकती, फिर भी हमने दक्षिण में जो चल रहे थे काम उसको एक्सपीडाइट किया। 26,000 करोड़ की नई ट्रांसमिशन लाइन का काम शुरू किया। आगे आने वाले दिनों में और उसको स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं इस वर्ष में। और गैस बेस्ड प्लांट्स काफ़ी मात्रा में दक्षिण भारत में हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली और शायद कुछ गैस भी मिलने वाली है अभी नीलामी से। तो पूरे देश के हर राज्य के लिए हमने सुविधा उपलब्ध कराई है। जैसा मैंने बताया, हम उनके लिए मदद करने को तैयार हैं, उनके डिस्कॉम्स को, लेकिन ताली दो हाथ से बचती है। कई राज्य सरकार अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, कई और आएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। 157, please hold on. I will come there. Hello, sir. We'll come Utpal back. from Mint. Sir, you mentioned, I'll just add to the question which was asked earlier. You said some states governments are not cooperating. Can you please name them? But you also added that people will judge them. I think now people will get bored of the same question. Sir, you have talked about a power fund. Please, you have asked चलो your question. पूछने दो, is a backbenchers get a special. Always happens, sir. Sir, you have talked about a power fund, and what is happening there? This fund has been talked about with reference to distress assets. What is your big idea there? Thank you for raising this question. It's a possible solution to some of the problems and stress in the sector which we are exploring. I'm in touch with the banks to see what is the extent of their problem. In fact, just before March 31st, I think 20th March or 15th March, we had a meeting with the main bankers, and I found that the problems of the power sector are being exaggerated in the media. They are not as severe as is being made out to be. Several projects have now come on stream. As I told you, installed capacity increased by the highest in the history of India. Now the gas resolution has been done in the last 1.5 months. But if there is still some stress, we are looking at seeding a power fund which could be supplemented with support from international investors. And a lot of international investors have shown interest in investing in India. They believe the India story is the best story happening in the world. Today it is the world's fastest growing large economy. भारत आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे तेजी से प्रगति करने वाली बड़े राज्यों में प्रथम श्रेणी पे है और पूरे विश्व में भारत में निवेश करने में बहुत उत्साह है। हम समझते हैं पावर फंड अगर हम सीड करते हैं तो उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां जुड़ के एक अच्छा मजबूत कॉर्पस बन सकता है जिससे हम वेरी अट्रैक्टिव तरीके से एसेट्स को एक्वायर करके उस फंड में भी अच्छे रिटर्न्स भारत की जनता अगर उसमें इन्वेस्ट करे उनको, भारत की कंपनियां करें उनको, और जो भी और उसमें इन्वेस्ट करे सबको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। Yeah, please. Sir, Anshu from CNBC TV 18. My first question is, Power Minister Piyush Goyal addressing media persons and answering questions in an interaction with the media persons there. We'll get back to him, but at present we'll take you to Surat, where BJP President Amit Shah is addressing the media persons. ઉપલબ્ધિઓ સરકારની પહોંચાડવાનું કામ કરવાના છે. હવે આપ તમારા બધા કઈ સવાલ પૂછવો તે પછી હર્ષદભાઈ તમે જરા અમિતભાઈ, આપણે જે ચુનાવી ઢંઢેરો હતો, ચુનાવી ઘોષણા પત્રની અંદર
બ્લેક મનીની સાથે સાથે આપણે કિસાનોના વિકાસની પણ વાત કરી. હવે આજે દક્ષિણ ગુજરાતની જે 12 થી 15 સુગર ફેક્ટરીઓ છે એ લોકોને જે શેરડીના ભાવો પડ્યા છે એ મળવાપાત્ર કરતા ઓછા પડ્યા. તદ ઉપરાંત એ લોકોની હાલત આજે એવી છે કે દુકાળમાં અધિક માસ એમાં ટેક્સેશન આવ્યું. 413 કરોડ રૂપિયા લોકોને ટેક્સ ભરવાનો આવ્યો. સુગરના ચેરમેનો FM ને મળ્યા છે, ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરને. એ લોકોને માત્ર હૈયા દરપત આપી છે. ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગ એ લોકોના ખાતાઓ સર્ચ કરે. દક્ષિણ ગુજરાતની સુગર ફેક્ટરીની હાલત આજે એવી થઈ જશે કે 413 કરોડ રૂપિયા ટેક્સ ભરવાનો આવશે તો સુગર ફેક્ટરી બંધ થઈ. તો સરકાર એમાં શું હલ કરવા માંગે? ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે આ બજેટનો જે ફાઇનલ એપ્રુવલ લીધી આની અંદર આનું સમાધાન પૂર્ણ રીતે કરેલું છે. થોડોક ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ રહ્યો છે. CR પાટીલના નેતૃત્વમાં, દર્શાબેનના નેતૃત્વમાં દક્ષિણ ગુજરાતના બધા સંસદ સભ્યો નાણામંત્રીશ્રીના સંપર્કમાં છે અને એનો નિશ્ચિત ઉકેલ આવી જશે. કોઈ ચિંતા રાખવાની જરૂર નથી અને ઉકેલ આવી જ ગયો છે. એની અંદર એક ભાષામાં થોડો ટેકનિકલ ફેરફાર કર્યો. BJP President Amit Shah addressing media persons in Surat in Gujarat. Remember, the government, the NDA government, has completed the first year of governance, and since yesterday we've seen the BJP leaders and the cabinet ministers crisscrossing the nation and apprising the people of the achievements and the developments which have been put forth by the government, the initiatives. It's not just about the road which has been travelled, but the journey from here on for the next, for the remaining tenure of the government is also being highlighted by the ministers all across the country. And from here we again take you back to Power Minister Piyush Goyal's press conference. He is addressing media persons and answering questions in Delhi. कुछ स्टैंड लेगी. दूसरा सवाल इसी के साथ जोड़ते हुए कि एलईडी की बात की थी आपने. पूछ लीजिए पहले एक सर, सवाल important. प्लीज होल्ड ऑन वन क्वेश्चन देन ऐसा है कि आप लोग ये सवाल जिस सरकार ने एक 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड दिया है उसी को पूछे तो अच्छा है, क्योंकि मुझे उसमें तो कुछ डिटेल्स, कुछ स्पेसिफिक्स मिले नहीं, तो इसलिए मैं उसका जवाब दे पाऊँ मेरे लिए बड़ा मुश्किल है. पर शायद अगर आप सवाल पूछोगे तो ये ध्यान रखना कि आपको गाली गलौच भी हो सकती है. 78 प्लीज. सर, मैं दीपाली हूँ CNBC आवाज़ से. सर, मैं आपसे एक स्पेसिफिक डेटा चाहूँगी जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कितना निजी निवेश आया है बीते 1 साल में. साथ ही मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आपने जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ भी मीटिंग ली थी और सरकार की तरफ से एश्योरेंस दिया था कि उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, सब्सिडी दी जाएगी. इस मोर्चे पर क्या कदम उठाया गया? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, सोलर पावर प्लांट्स मैन्युफैक्चरर्स के साथ जब आपने सजेशन किया था और आपने उनको एश्योरेंस दिया था कि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाए. धन्यवाद दीपाली जी. सोलर में जितने टारगेट सेट किए थे पिछले वर्ष हमने उसको एक्सीड किया है, जो अब तक होता नहीं था. इस वर्ष को एक तरीके से आपको फाउंडेशनल ईयर देखना पड़ेगा. फाउंडेशन इज बीइंग सेट, रोड मैप इज बीइंग सेट. आखिर सोलर प्लांट को जमीन लगती है, सोलर प्लांट को इवैक्यूएशन लगती है, सोलर प्लांट के साथ साथ आपको पीक लोड मैनेज करने के लिए स्पिनिंग रिजर्व की भी कल्पना और उसका भी प्लानिंग करनी पड़ती है. सोलर प्लांट के लिए आपको किस प्रकार से PPAs होंगे, वो बिडिंग रूट से होंगे, उसका फीड इन टैरिफ होगा, रेगुलेटरी कमीशंस कैसे देखेंगे, इस सब का फाउंडेशन ले किया गया. आपको जानकारी है री इन्वेस्ट 2015 में 270 गीगावाट. प्रधानमंत्री जी ने पीछे कहा था पहले इस देश में मेगावाट की कल्पना होती थी रिन्यूएबल एनर्जी में, अब इस देश में गीगावाट की कल्पना होती है, जो शायद ही दुनिया में कम देश है जो गीगावाट की कल्पना कर सकते हैं. हमने 273 गीगावाट की कमिटमेंट्स मिली हैं. अब कई और कंपनीज मुझे मिलती है, कहते हैं हम भी और बढ़ाना चाहते हैं अपने सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी प्लांट्स को. तो ये निवेश तेजी से आएगा. अभी जो टारगेट्स थे वो पूरी तरीके से मीट हुए हैं. दूसरा आपका सवाल, हाँ, सोलर के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सरकार के साथ
कंधे से कंधा लग के मदद की और इस बड़े 1 लाख मेगावाट के मिशन को सहयोग दिया। ऑलरेडी एनटीपीसी ने लगभग 250 मेगावाट की बिडिंग करके अलॉट कर दिए हैं प्रोजेक्ट्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को जो WTO कंप्लायंट है उनके ओन यूज़ के लिए। आगे आने वाले दिनों में काफ़ी ऐसी नई बिड्स डिफेंस करने वाली है, रेलवेज भी सोलर यूज़ करने वाली है। जहाँ जहाँ WTO कंप्लायंट मैनर में हम अलग अलग कोने निकालेंगे जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को सक्षम किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले दिनों में डोमेस्टिक की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अब बहुत बड़े कैपेसिटी आने जा रही है। 81 last row. Yeah. Sir, this is Akash Vashish from Mail today. What is the progress on renewable energy bill? आप करेंगे क्या प्रोग्रेस, क्योंकि हम अब मेरा भी गला बैठ रहा है, सेम क्वेश्चन। सर, रिन्यूएबल एनर्जी बिल पार्लियामेंट में तो एक प्राइवेट बिल जो हुआ था, बट हमारे साइड से अभी रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी बनाने के लिए और रिन्यूएबल एक्ट का ड्राफ्ट बनाने के लिए एक कमेटी अपॉइंटमेंट हुआ। वो कमेटी 2 बार मिल चुके हैं और अगले 3 महीने में हमें हमारा वेब पेज में वो जो ड्राफ्ट रिन्यूएबल एनर्जी एक्ट डालने के लिए पार्लियामेंट में जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने डायरेक्शन दिया। उसी वजह से अगले 3 महीने के अंदर हमारा जो ड्राफ्ट रिन्यूएबल एनर्जी बिल होगा वो हम वेब पेज में डाल के सबका सजेशन मांगेंगे और पॉलिसी भी एक बनाएंगे। 24. एक मिनट थोड़ा सा You see, one or two things I would like to mention, which are major policy initiatives which are going to be taken by the government to promote renewable energy. One, as you know, there are RPOs already existing, but RPOs are not complied with by many states. So we are making the RPOs, increasing the RPOs. We are going to say in the tariff policy and the Electricity Act amendment that the RPOs will be aligned with the National Action Plan on Climate Change, and for solar particularly it will be raised to 8%. Similarly, the penalties for non-compliance of RPOs are being made very stringent. But the biggest policy initiative of all is the one that I'm going to mention now, is that we are going to make it mandatory that all thermal plants which are going to be set up in future, even the plants which are already established, they can also do it, but all the plants which will come up in future will have to set up a certain percentage of renewable capacity also. This will promote new renewable capacity in a big way. We are looking at that percentage, what it should be. It can be 5%, it can be 10%, but every thermal power plant which is going to come up in the future will have to set up a certain percentage of renewable capacity also. You want to just add about this? On account of the increased cess, the coal contribution cess, cess to the amount of 30,500 crore this year would be added, and this will increase to around 30,000 crore per year. The coal cess, which we have increased from 50 rupees to 100 in last year's budget, 100 to 200 in this year's budget, will bring in such large amounts of support for renewable energy. Mr. Goyal, Kriti Well, from please Raj hold on. Television. Minister will In the take recent the years, question, please. power outage was the prime reason for laggard growth of manufacturing sector. But congratulations to you now. India Inc. says that your ministry is one of the best performing ministries. But there is this curious case of surplus power, but states are not buying this power. So much so that on 29th of April, your National Grid Monitoring Station mentioned that power could be available at 0 rupee per unit. So how do you plan to correct that anomaly and this paradox? Well, I think you should all make up your mind. On the one hand, keeping power costs low and helping the consumers and the discoms, I think I'm doing the right thing. Every developed country in the world always has a surplus capacity in power. They have enough redundancy in the system so that at no time there is power outages. We are planning for that. I'm happy that there is power sufficiently available, and we will continue to ensure adequate coal and power in the system. The steps taken by the government of India, and particularly the foundational steps to lay a roadmap for
our Make in India program and develop Indian industry, ease of doing business, digital India, the land acquisition bill, all of these will help rapid industrial growth. We have to reach power to 28 crore poor people who have been deprived of this for after 68 years after independence, which is a matter of shame for this country and all of us. That commitment to give them power is something we have set out to fulfill and for which we need this kind of extra power. पीयूष जी, मैं अरविंद हूँ इंडिया न्यूज़ से। मेरा सवाल ये है कि जहाँ बिजली में बहुत सारा सुधार हो रहा है, लेकिन अगर आप एनसीआर की हालत देखें तो बहुत ज़्यादा वहाँ घंटों घंटों कटौती हो रही है। चाहे आप गुड़गांव की हालत देख लें, चाहे गौतम बुद्ध नगर की देख लें, मेरठ की देख लें, गाजियाबाद की देख लें, बहुत अच्छी हालत वहाँ नहीं है। देखिए, का तो जैसे मैंने कहा, आपको उनको पूछना पड़ेगा। हमारी तरफ से बिजली पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। अभी गैस की बिडिंग हुई, उसमें भी उन्होंने वो आई नहीं, उन्होंने खरीदी नहीं तो सस्ती बिजली खास तौर पे पीक आवर्स में शाम को दिल्ली को मिल सकती थी। और जब यहाँ के ऊर्जा मंत्री मुझे मिलने आए, मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया था कि आप गैस की बिडिंग में भाग लीजिए, और शायद उन्होंने निर्देश भी दिया था अपने अधिकारियों को, पर शायद आपसी प्रॉब्लम्स की वजह से तय नहीं कर पाए होंगे कि बिडिंग करना कि नहीं करना। वो आपको राज्य सरकार को ही पूछना पड़ेगा। जहाँ तक गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की बात है, वो ज़रूर बिजली खरीद सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। मैंने चिट्ठी भी लिखी है कि बिजली खरीदे उत्तर प्रदेश। वहाँ पे तो उल्टे अपना पावर प्लांट भी है, वहाँ तो लोकल बिजली बन सकती है। जहाँ तक गुड़गांव का सवाल है, क्योंकि गुड़गांव की बहुत रैपिड एक्सपेंशन हुई, तो मैं समझता हूँ कोई जिम्मेदार सरकार को साइमल्टेनियसली वहाँ का ग्रिड और वहाँ की ट्रांसमिशन कैपेसिटी को डेवलप करना चाहिए था।